Now the height of tide at Tianjin on 11th April 1992 at 11:24 hours local time is 2.606 meters. ठीक है? So supposing I now give you a question and I tell you that the vessel on 11th April at 11:24 hours runs aground at Tianjin. Okay, listen to the question. It runs aground at Tianjin at 11:24 hours. Find the earliest time she will refloat on the same day. Find the earliest time she will refloat on the same day. So अब generally we always run aground on a falling tide. Okay. When will she refloat? When the tide starts to rise again. And the height of tide is 2.606 again. Then she'll be ready to float off. And जैसे ही इस से 1 मिलीमीटर पानी ज्यादा हो जाएगा तो she will float off the rock. Agreed? Yes, sir. Okay. So now for finding out the time from the height, you can't use this method, long one. You have to go back to your traditional method. So you will go to Tianjin, volume 3. Tianjin is a standard port. So locate the page. Locate the page. It's on page number 186. 186, sir. 17. Correct. Look for 11th April. Okay. 0330. Height of tide 1.9. 1.9 meters. 0827. Height of tide 3.5 meters. 3.5. 1557. Height of tide 0.8. 0.8. 2226. Height of tide 3.4.
I have Haji. So we find that she has run aground at 11:24 between this time. She has run aground. जब हाइट ऑफ टाइड 2.606 हुई उस वक्त ये रन अग्राउंड किया. अब ये फ्लोट ऑफ करेगा जब ये टाइड राइज करेगा इन दोनों के बीच. जब हाइट ऑफ टाइड फिर से 2.606 आएगी तो शी विल स्टार्ट टू राइज. देन शी बी रेडी टू फ्लोट ऑफ. एग्रीड. तो अब ये मेरा सेकेंड मेट्स का क्वेश्चन बन गया. सो गो टू द ग्राफ. ग्राफ खोलो. सो इन दोनों में व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइड? What is the duration of tide? 6 hours 29 minutes. 6 hours 29 minutes. 6 hours 29 minutes. All right. What is the interval from high water? No, not interval from high water. Sorry. But I have to find out. I have to find this out. The interval from high water. My low water is 0.8. My high water is 3.4. So I go to the graph. So on the top, I got a high water. That is 3.4. So look for 3.4. On the bottom, I got 0.8. So look for 0.8. Join them.
with a line. Then you want 2.606. So on the high water line, look for 2.606. Drop a perpendicular. जहां पे ये स्लांट लाइन को जाके मिलती है, We'll get a pet. go right. Go right. Now you got three curves here. You got a curve of minus 7 hours. Then you got a curve of minus 6 hours. You are wanting 6 hours 30 minutes approx. So go right in the middle of this width of 6 and 7. Go in the center of it, because 6 hours 30 minutes will be between 6 and 7 in the horizontal direction. Whatever is the width, उसका center ले लो. अगर ये 640 होता, then you would have taken 1/3 on this side. अगर ये 620 होता, you would have taken one third on this side. And from that point onwards, drop a perpendicular down. And नीचे में जो scale है, नहीं मैं बोलूंगा सर, एक बार दोबारा समराइज कर दो क्योंकि नेटवर्क चला गया था. read off the interval before high water. उसको interpolate करके exactly and tell me the value. कौन से ऐप पे लगाते हैं? वो लगाता है वो पेटीएम मनी. Tell me the number of hours. Switch off your mic, please. Tell me the number of hours. Please mute your mics. इनको म्यूट जीरोधा का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है. अरे एक बार प्लीज दोबारा समझ चला गया था मेरा, जहां से आपने इंटरवल बताया वहां से. कहां से? So यहाँ से ड्यूरेशन इंटरवल आपने मार्क करे थे ना 2.606, ये यहाँ से. ओके, तो पहले मैंने स्लैंट लाइन बना ली थी, फिर मैं फ्लोट ऑफ करूंगा 2.606 जब मेरी हाइट होगी फिर से, देन आई विल बी रेडी टू फ्लोट ऑफ. उसके 1 मिलीमीटर बाद जैसे ही पानी ऊपर आएगा मैं आई विल फ्लोट ऑफ. तो 2.606 से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जहां पे उसने स्लांट लाइन को मारा आई गो राइट. फिर वहां पे दो ग्राफ हैं, -7 आवर्स -6 आवर्स. मेरे को 6.5 चाहिए, तो जो ये हॉरिजॉन्टल विड्थ 6 और 7 की अवेलेबल है मुझे, उसके सेंटर मिड पॉइंट पे आ जाऊंगा मैं. वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, नीचे में बॉक्स आ गया. हाउ मेनी, वहां पे माइनस हाउ मेनी आवर्स इज इट कमिंग, टेल मी दैट वैल्यू. सर हाई वाटर से 2 hours 20 minutes पहले आ रहा था.
minus 2 hours, 20 minutes. Okay. Others, are you also getting in the same region? Yes, sir. 2 hours, 20 minutes? Yes, sir. 2 hours 20 minutes. सबका सेम आ रहा है? यस सर सेम आ रहा है. ओके. सो इसका मतलब है मेरे को हाई वाटर से 2 आवर्स 20 मिनट्स पहले जाना है. मेरा हाई वाटर टाइम 22:26 है. इज माई हाई वाटर टाइम. सो माइनस 2 आवर्स 20 मिनट्स कर दिया तो कितना आता है? So I will be ready to refloat from 2006 onwards. I'll be ready to refloat. Okay with everyone? Okay. So basically this becomes a combination of your phase 1 and second mates. ये second mates की extension हो गई. So पहले आप 2.606 निकालोगे, उसके बाद टाइम निकालोगे कि कब वो रिफ्लोट करेगा. Okay. Little bit of theory. तो ये वॉल्यूम 3 के ग्राफ में जो फैक्टर दिया है उसका क्या यूज है सर? वो उसका दूसरा मेथड है. मैं वो मेथड अभी नहीं बता रहा. वो तो सेकंड मेट का आपका मेथड है. वो तो सेकंड मेट्स का है. You'll have to revise your second mates का this thing. मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा to do a revision. I'll send you some video links. मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ. Just go through. अगर ये ग्राफ में जो हमने नीचे एक्सटेंशन किया था ना जहाँ पर 2 hours 20 मिनट आया था वो माइनस में, अगर उसको प्लस तक लेके चले आते तो जो प्लस वाला है ना नीचे +1 +2. नहीं तो आप वो फॉलिंग टाइड पे थोड़ी करोगे आप रिफ्लोट. अच्छा हाँ ठीक है वो फॉलिंग टाइड वाला होता है. आप तो राइजिंग टाइड में ही करोगे ना रिफ्लोट. You will be so many intervals, so many hours before the high water only ना. You cannot be after the high water. वो तो फॉलिंग टाइड चला गया. ओके सर ओके, तो वही डाउट था फॉलिंग टाइड का. ओके ठीक है. वो तो फॉलिंग टाइड है ना. तो वो तो you will not do that. You will always run aground on a falling tide and you will always float off on a rising tide. Please remember that. ठीक है? And I'll be sending you the links. You can go through those links of tide, so that you can do a revision of your second mates standard port calculation and secondary port calculation. ठीक है? Please do a revision of that. Is it okay? ओके. और उसके लिए रिवीजन करने के लिए बेस्ट बुक जो है आपकी वो कैप्टन पुरी की
चार्ट वर्क फॉर मैरिनर्स है, वो बेस्ट किताब है, क्योंकि उसमें जितने भी टाइड के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, सारे के सारे सॉल्व्ड है. सो नथिंग कुड बी बेटर देन दैट. So Captain Puri's book is the best for tide and for many things, many other things also, but मैं tide की specifically बातें कर रहा हूँ अभी. तो tide के लिए it is the best because उसमें कोई 22 odd question दिए हुए हैं, सारे के सारे solved है. So if you want to revise your tides, just go to Captain Puri's book. And just do it from there, nowhere else. Because जहां जाओगे बाकी में कंफ्यूज होगे. ठीक है, Okay, ओके. सर अभी पेपर्स में सेकंड नहीं आता ना, हाँ जी, अपने फेज 1 वाले में सेकेंडरी पोर्ट का कैलकुलेशन तो नहीं आएगा ना? भाई आज कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है ना. सेकंड मेट का तो कभी भी पूछ सकते हैं आपसे. तो वो तो मतलब वो कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. बिकॉज इट इज मतलब इट इज लाइक दिस थिंग कि nobody can give that kind of a guarantee कि कुछ नहीं, वो नहीं पूछा जाएगा या ये नहीं पूछा जाएगा. बिकॉज सेकंड मेट्स इज अ पार्ट ऑफ लोअर ग्रेड, कैन बी आस्क्ड एनी टाइम when you go into the higher grade. So the tidal curve follows a cycle like this. This is a tidal curve. सर एक बार प्लीज रिपीट करा दीजिए वो नेट. This is a tidal curve. हाँ भाई. 0 hours. अच्छा. Please put your mics on mute. What we are doing now? Please put your mics on mute. This is a tidal curve. And the tidal curve is against time. And height of tide is on the y-axis. So when I say this is a tidal curve for Tianjin at 11:24 hours, so let's say this is 11 hours. What will be the height of tide at Tianjin at 1100 hours? The HOT was 2.606 meters. When she had a height of tide of 2.606 at 11:24 hours at Tianjin. So सर 11:24. 11:24, correct. Correct. 11:24. The height of tide was 2.606 over there. So what are the reasons or the causes why the height of tide is 2.606? The number of reasons are several, which go into making of a tide. Okay, so it could be due to the geographical positioning of the heavenly bodies with respect to the earth. So supposing
So what we are doing about is causes of tide, or how are tides caused, is what I am giving you a theory on. No question comes on this, but I'm just giving you a theoretical background to it. So if this is Earth, and the Earth is still, and this is the water on top of the Earth. This is the water body on top of the Earth. Now the water body is disconnected from the Earth. The two are not joined. The water is on top of the Earth. And then you have the sun. And then you have the moon, the heavenly bodies. And the positioning will keep on changing. So, and the Earth is inclined at its axis. And therefore the Earth is turning around also. So initially, when the heavenly bodies are there, they are exerting a attractive pull towards them from both the directions. The attractive forces are acting. So as a result, the water body will get attracted because that is loose. And so therefore, a bulge appears in the direction where the heavenly body is. So this is a bulge which gets created. The bulge is of the water, not the land mass. So therefore, as a result, now if the sun goes here, the bulge will also travel. And similarly, the moon goes wherever, the bulge will travel. So at this latitude, this is going to be the high water. Similarly, this is going to be the high water. And consequently, at the poles will be a low water. And now, as this heavenly body will keep going up, the bulge will keep going up, the high water would be in that location, and 6 hours later would be the low water away from it. And then 6 hours again later would be the high water in that location, and then low water. And that is how you have the cycle of high water, low water, high water, low water. So depending on the geographical positioning of the heavenly bodies with respect to the Earth, do we encounter the tide at that particular latitude, wherever she is. Now, this is one cause, one factor. Simultaneously, this Earth is also turning around, is also rotating around its axis. So therefore, when the Earth mass is turning around, the water is lagging behind. Because the water, so therefore, as the Earth mass turns, the water lags behind. And this water mass, which lags behind,
पीछे से फिर से एक और अर्थ मास आ जाता है जो कि इस वाटर मास को पुश करता है, and therefore this water mass also rises thanks to the pushing of the earth mass. So what do you have? You have another rising in tide due to the undulation of the land, of the earth mass. So that is another factor. And like this, in some places you have shallow water. So therefore you have pushing from down below. So therefore there will be a certain rise in tide. Now all these various factors which go towards the why tide is 2.606, the number of causes are 166 in number. That means what I'm trying to say is 166 number of causes of tide exist, which make the height of tide at Tianjin equal to 2.606. Now, out of these 166, 162 causes are minor in nature and 4 are major in nature. The 162 minor ones we neglect. We don't look at them, but we look at the 4 major ones. And these 4 major ones are your M2, S2, K1 and O1. And हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. Now, M is moon. 2 means diurnal. Sorry, 2 is semi-diurnal. That means twice daily. 1 is diurnal. That means once daily. Semi-diurnal, twice daily. Diurnal, once daily. Now, what am I trying to say? I am trying to say that the tide is caused due to the amplitude and due to the declination of the heavenly body of the sun and the moon. The tide is caused because of these 2 reasons, the amplitude and the declination of the sun and the moon. So, the factor due to the amplitude of the moon and due to the amplitude of the sun, the factor of the moon is called as, is given to a name, and that is called as M2. And the factor of the sun, which is caused due to the amplitude of the sun, is given a name which is called as S2. In the case of declination, again, whose declination is greater, sun or the moon?
किसकी डिक्लिनेशन ज्यादा होती है? मून। सन की के मून की? मून की सर। मून की ज्यादा क्यों होती है? किसकी किसकी डिक्लिनेशन का इफेक्ट अर्थ के ऊपर, टाइड के ऊपर ज्यादा होगा? मून का मून का सर। सर मून का। मून का सर। अच्छा, मून का क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि वो नजदीक है सर। क्योंकि मून नजदीक है, क्लोज है सर। it's closer. So the declination effect of the moon is far greater than the declination effect of the sun. So the declination effect of the moon gets split into two parts. Part of it gets combined with the entire declination effect of the sun, and together they are called as K1. And the remaining part of the declination of the moon, the effect of that is called as O1. So now write down one line on these four fellows. You can write down first one, M2. Write down M2. It is the lunar semi-diurnal amplitude based principal constituent. So semi-diurnal. It is the lunar semi-diurnal, 2 is semi-diurnal, amplitude based principal constituent. So next line, write down S2. It is the solar semi-diurnal amplitude based constituent. एक बार फिर से बोल देंगे डेफिनेशन किसकी? S2 की सर। It is the solar semi-diurnal amplitude based constituent. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, K1. It is the lunisolar LUNISOLAR diurnal declination based constituent. Last one, O1 पे आ जाओ. It is the lunar diurnal declination based
constituent. ओके, एक क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए. टेक अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क. फाइंड द HOT at 0930 hours find the HOT at 0930 hours on 7th March 1992 at Dover. At Dover, DOVER. Sir, 7th of March, 07 March. The 7th March, 0930 hours. 7th March, 0930 hours at Dover, DOVER, Dover. सर इसका आंसर प्लीज शेयर कर सकते हैं आप? अभी नहीं करूंगा मैं, बाद में करेंगे, बाद में कल tomorrow we'll discuss it, then I'll share it with you. So एक बारी I just want you to do this. Please be ready. Create a scenario as if you're in an exam. Have your watch with you. Time yourself. कितना time लगता है आपको? Okay. So time yourself. Have your sheet there in front of you. No harm. उस sheet को side में रख लो. अभी पहली बार कर रहे हो तो एक बारी उसको practice के लिए सामने रख लो. No issues. Write down as if you're writing down in an exam. Line number वैसे ही लिखना. ठीक है. एंड जो बोर्ड पे हमने किया था बिल्कुल वही होना. कैलकुलेशन सारी वैसी होनी चाहिए. tan r की कैलकुलेशन नजर आनी चाहिए. R कैसे कैलकुलेट किया वो नजर आना चाहिए. राइट, लाइक दैट ओनली. फिर कैपिटल R कैसे कैलकुलेट किया वो नजर आना चाहिए. कॉपीड. ठीक है. ओके सर. ऑलराइट. और ये जो थ्योरी कराया था मैंने, ये कुछ एग्जाम में नहीं आता, ये खाली ओरल्स में पूछते हैं. तो ये ओरल का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करा दिया अभी. One. We're coming on to line number 18. Line number 18 is the same as line number 16. So repetition. So R cos R. So line number 18, you repeat line number 16. So what was line number 16 equal to? R cos plus 0.654. Correct. Plus 0.654. So that is your line number 18. Is line number 18 okay with everyone? Yes, sir. Yes, sir. Line number 19. This line number 18, we cannot calculate it by putting these values of capital R and small r individually. अरे हमने लाइन नंबर 16 में ऑलरेडी निकाल ली है.
line number 16 is equal to line number 18. सर सो लाइन नंबर 16 का जो जियोग्राफिकल सम है वो ओनली लिखेंगे लाइन नंबर 18 में, वो M2 और S2 की वैल्यू नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ओनली वही Correct. लिखेंगे। जो उसका algebraic sum है वो, जो उसका Okay. algebraic sum राइट हैंड साइड पे लिखा था, लाइन नंबर 16 का सम टोटल क्या है? यस सर, वो Plus- 0.654। So 16 is equal to 18. Is that okay? (19) is equal to HF cos theta for K1. Basically 12 into 13 into cos of 11 for K1, जो हमने छोड़ दिया था, जिसपे हमने क्रॉस मार दिया था, हमने M2 और S2 का निकाला था, K1 को ब्लैंक छोड़ दिया था, अब उसकी बारी है। सो 0.92 into 0.39 into cos of 219 is what we are doing now. सर समझ नहीं आया सर। minus 0.279. 0.279. 279. सर 490 ये लाइन नंबर 19, line number 19 is a repeat of what you did for line number 16. Line number 19 is a repeat of line number 16. Only difference is आपने K1 को छोड़ दिया था, हमने खाली M2 और S2 को किया था। K1 को छोड़ दिया था, ओवर छोड़ दिया था, उसको टैकल कर रहे हैं, जो छोड़ दिया था उसको ले रहे हैं अब। So 12 into 13 into cos of 11 of K1. (0.92) into 0.39 into cos of 219. That is equal to this. Is line number 19 okay with everyone? नहीं सर समझ नहीं आया सर। अब मैं क्या कर सकता सर हूँ? K1 की वैल्यू 219, सर मैं K1 कोई की बात वैल्यू नहीं। कौन सी होगी? ये 12 into 13 into cos of 11. सर ये K1 की वैल्यू कितनी होगी? K1 is the column K1. Have a look at the column. लाइन नंबर 15 हमने कैसे 15 और 16 कैसे कैलकुलेट करी थी, जरा देखो।
उसमें सर हमने M2 और S2 दोनों का कैलकुलेशन करके यूज कर लिया था, अब हम K1 के लिए यूज कर रहे हैं। ओके करेक्ट। ठीक है सर, समझ गया। वो हमने M2 और S2 का किया था, अब हम K1 पे आ गए हैं। सिमिलरली O1 का निकालिए। सर O1 का आया -0.027। यस सर। Yes, sir. माइनस 0.027 Is everybody getting the same answer? That Yes, we- Yes, sir. so basically हमने अब जो किया है वो बेसिकली ये किया है 1.20 multiplied by 0.29 multiplied by cos of theta for O1 is 265.54. ये हमने कैलकुलेट किया। This is how we've got this. Is line number 20 okay with everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I'm coming on to 21. 21 is the same as line number 6. 21 is the same as line number 6. -0.306. Line number 6. Sir, 2.31 meaning. 2.31. Line number 21 is the same as line number 6. Line number 22 is capital R square into capital F4 into cos of 2R plus F4 means line number 17 square, so 1.06 square into capital F4. कैपिटल F4 का वैल्यू है लाइन नंबर 14 से मिलेगा आपको 0.052 into cos of line number 17 152.206. Sir, -0.052. Minus 0.052. Are the others also getting the same answer? Yes, sir. -0.05. Is line number 22 okay with everyone? One moment, sir. हाँ जी. सर एक बार लाइन नंबर 20 से दोबारा बता देंगे सर? लाइन नंबर 20 से लाइन नंबर 20 is O1 की HF cos theta 12 into 13 into cos of 11 for O1. सर अच्छा सर वो तो आ गया था सर, सॉरी 21 से सर, 21 से 21 is the same as line number 6.
21 is the same as line number 6. So line number 6 में जो भी लिखा हुआ है वही वैल्यू को कॉपी कर दो, वो ml की वैल्यू है. Line number 22. So is line number 21 okay with everyone? Yes, sir. Line number 22 is capital R square into F4 into cos of 2R plus F4. Have a look at your sheet. Have a look at your sheet. And that sheet में line number 22 देखो क्या लिखा है. कैपिटल R इंटू कैपिटल R लिखा हुआ है, तो वो R स्क्वायर हो गया. R की वैल्यू इज 1.06, सो 1.06 स्क्वायर हो गया. कैपिटल F4 की वैल्यू 0.052 है. Into cos of 17, line number 17. So is line number 22 okay with everyone? Yes, sir. Line कैपिटल line एफ number फोर 20. हाँ जी. सर कैपिटल F4 सर इसकी वैल्यू सर किधर से आई? ओके ओके 14 से. लाइन नंबर 14 में दी हुई है. हाँ जी सर. ओके 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 थैंक यू. लाइन नंबर 14 से आ गई. हाँ जी. लाइन नंबर 23 is capital R cube into capital F6 into cos of 3R plus F6. minus 1.085. F6 की क्या वैल्यू है? सर जीरो है ना सर? सर जीरो आएगा सर. जीरो. तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि F6 की वैल्यू 0 है. लेकिन किसी और क्वेश्चन में जहां पे F6 की वैल्यू होगी तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ओके. इस क्वेश्चन में F6 की वैल्यू 0 है, लेकिन किसी और क्वेश्चन में अगर F6 की वैल्यू है तो आप प्लस 1.06 क्यूब इंटू F6 इंटू कॉस ऑफ माइनस 155.691 करेंगे, जो भी वैल्यूज आएंगी. इज दैट ओके? यस सर. लाइन नंबर 24 इज इन सबको ऐड कर दो. 2.606. करेक्ट. इन सबको ऐड कर दो. हाँ वही है सर 2.606. That will give you your HOT, and that is equal to 2.606 meters positive. So your height of tide is positive 2.606. Is this okay with everyone? यस सर.
हाँ जी, any doubt in all the 24 steps? सर समझ तो आ गया सर, खुद करेंगे तब भी पता चलेगा। सर ये नंबर 3 में f6 की वैल्यू जहाँ पे 0 आई है वहाँ पे स्मॉल f6 होना चाहिए ना, जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो। कौन सी लाइन की बात हो रही है? सर नंबर 23 सर, लाइन नंबर 23 में f6 की वैल्यू 0 है। स्मॉल f6 की वैल्यू 0 है ना सर? नहीं, कैपिटल F6 की वैल्यू 0 है ना। दोनों ही 0 थे सर, स्मॉल f6 भी कैपिटल f6। नील है सर दोनों। हाँ हाँ दोनों 0 में। सर भैया मुझे ये अटका हुआ दिख रहा है, सबको दिख रहा है? सर वो अटक गया। अटक गया, एक मिनट हो गया। Is it okay now? यस सर। Okay. गुड So नाउ। कैपिटल F6 की वैल्यू 0 है। So whole of 23 becomes 0. Is line number 23 okay with everyone? Yes, sir. हाँ जी। Any other doubt in any other line? Any other doubt in any other line? नो सर। सर लाइंस में तो डाउट नहीं है, आप बोल रहे थे कि टाइट टेबल से कैसे रेफर करना है, जस्ट टू रिमेंबर द स्टेप्स वो बताएंगे। हाँ वो मैं बताऊंगा अभी, पहले any doubt in line, any other lines? Okay. All right. So basically you can get, by doing this, you can calculate the height of tide at any of the ports whose data is given to you. You can calculate the height of tide of any of the data of any of these things. Now let's open up volume 3. Please open up volume 3. Okay, please open up volume 3. Now, first that you see on the pink page or the colorful page is index to standard port. Is that correct? Yes, sir. All right. You turn that page. So the first thing that you'll find is a graph. Yes, sir. This is the graph of volume 3, where it is giving you the height of tide for times between high and low water. और उसका ग्राफ दिया हुआ है. Turn the page. You'll find table 6. Turn the page. Next one. You'll find table 7. ये table 7 हमारे लिए important था.
राइट। सो हर वॉल्यूम में आप टेबल 7 को देखोगे, फिर उसके बाद में टेबल 8 आ जाता है, उसको छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट पेज यू विल फाइंड सिंगापुर केपल हार्बर। यहां से आपका शुरू होता है स्टैंडर्ड पोर्ट, which is called as part 1 of volume 3. This is standard port, Singapore Keppel Harbour. इसका पेज को टर्न करो, flip about 10 pages or 9 pages till you come to US San Francisco Golden Gate. Has everybody reached Golden Gate? सब आ गए? ओके। यहां पे आपका पार्ट 1 खत्म हो जाता है, स्टैंडर्ड पोर्ट, और यहां से शुरू होता है आपका पार्ट 2 सेकेंडरी पोर्ट। तो आपका सेकेंडरी पोर्ट शुरू हो गया। अब ये सेकेंडरी पोर्ट चालू हो गया आपका। फिर 10 पेजेस फ्लिप ओवर करो, नोटिस करो पार्ट 2 में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो दिए हुए हैं, दैट इज द कॉलम। सो दैट इज द डिस्टिंक्शन ऑफ योर पार्ट 2 सेकेंडरी पोर्ट, जहां पे लैट लॉन्ग दिया हुआ है, उसको भी फ्लिप कर जाओ 10 पेज till you come to page number 402 of my book, Peninsular Malaysia East Coast, Philippine Islands, Central China Sea. Have you reached? यस सर, आ गए। यस सर। यहां से हमारी पार्ट 3 शुरू होती है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक। दिस इज पार्ट 3। तो हर वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1 में भी, वॉल्यूम 2 में भी, यू विल बी गोइंग इनटू पार्ट 3। ये आपको याद रखना है कि आप पार्ट 3 में घुसोगे, पार्ट 2 में नहीं घुसोगे। पार्ट 2 इज सेकेंडरी पोर्ट, जहां पे लैट लॉन्ग दिया हुआ है। पार्ट 3 में Z0 है पहला कॉलम, first column is Z0 after the name of the port. So जहां पे Z0 है, मैं वो वाली पार्ट देखना है। ठीक है, इज दैट ओके? Okay, now go to the beginning of the book, come to preface, beginning of the book, come to preface। लेफ्ट साइड पे मैप दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 यूरोपियन वाटर्स, वॉल्यूम 2 अटलांटिक इंडियन ओशन, वॉल्यूम 3 पैसिफिक ओशन एंड एडजेसेंसीज, एंड ये मैप पे दिया हुआ है। टर्न द पेज, flip about 6-7 pages till you come to table A and table B. Roman number 26. Have you found out? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टेबल ए एंड टेबल बी। तो यहां पे हमें एक सैंपल दिया हुआ है, ये आपको
एग्जाम में भी जो आपको एमएमडी किताब देगा, आप वहां पे भी ये देखोगे। So have a look at table A and table B. How many steps lines do you find there? 40. Yes, sir. हमारे जो ये 24 है वो इस 40 का सबसेट है। ये हमने 24 उसमें से उठाए हैं। So 24 is a picked up from these 40. Okay. So we are now going to identify where these 24 are in this. ठीक है. So Sir, basically what's the difference between this 40 step और 24 step जो हम करते हैं? अभी पता चल जाएगा, अभी देखना। ये लंबा है. This is known as a long method. In the exam we will not do. Because हमारा 2 घंटे का पेपर है मेट्रोलॉजी। अगर मैं ये लंबा मेथड से करने गया तो 1 घंटा जाएगा। फिर बाकी 5 मेरे को 4 क्वेश्चन नहीं होंगे। Then metrology is history for me. Then I'll be repeating metrology. सर जनरली 24 स्टेप वाले में सर कितना टाइम लगता है सर? So this 24 steps is what we will be practicing on. अभी आपको जब करोगे घर में प्रैक्टिस करोगे, मैं होमवर्क दूंगा, you will time yourself, you will take about 30 minutes and gradually you will come to 20 minutes, and when you are in your full flow and top speed with everything practiced and all that, you'll be able to achieve it in roughly around 16 minutes. 15-16 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका। 16 मिनट में you'll be able to achieve 16-17 मिनट is a good speed that you have achieved when you are able to do it in 17 minutes. So that is your target. ठीक है? Is that okay? Nothing to worry, हो जाएगा, because there are Okay. you'll be able to do it in 17 minutes. That's not an issue. Okay. So let's locate. We are looking at table A and B and simultaneously looking at our sheet. Okay. So उसका Z0 लाइन नंबर 1 हमारी लाइन नंबर 4 है, उसकी लाइन नंबर 2 हमारी लाइन नंबर 5 है, उसकी लाइन नंबर 3 हमारी लाइन नंबर 6 है। इज दैट ओके? उसकी 3 हमारी 6। उसके बाद हम लिखते हैं M2, S2, K1, O1 एंड कॉन्स्टेंट्स। Look on the bottom right hand side of the page. You will find these 4 values. मिल गया? Bottom right पे नजर आ गया? मिल गया सर। Has everybody found it? मिल गया सर। Okay. So ये कॉन्स्टेंट्स मेरे को यहां पे दिए हुए हैं, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। I've already got it here. उसके बाद मैं वो 4 कांस्टेंट लिख लूंगा। फिर मैं आ रहा हूं टाइडल एंगल्स पे। मैं अपने वाले लाइन नंबर 7 पे आ रहा हूं। अब ये क्या करता है ये लॉन्ग मेथड में, हाउ डू आई फाइंड आउट ए?
आई गो टू द टेबल 11th अप्रैल, उसी तारीख का मैं टाइडल एंगल निकाल लेता हूं, करेक्ट? यस सर। यस सर। अच्छा, ये क्या करता है, ये इसकी लाइन नंबर 4 देखो, पहले कहता है A1, मतलब पहले ही ये निकालता है एक दिन पहले का, मतलब अगर 11 अप्रैल है तो ये पहले 10 अप्रैल का निकालेगा वैल्यू, फिर 12 अप्रैल का निकालेगा A2 नेक्स्ट डे की, फिर इन दोनों का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको कैलकुलेट करता है ये। तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट, आई विल गो स्ट्रेट टू द डेट, जो उस दिन की जो वैल्यू है मैं वही कैलकुलेट कर रहा हूं। इज दैट ओके? ओके। सो मेरा 7, मेरा लाइन नंबर 7, इसका लाइन नंबर 10 है, इसका 10 मेरा 7। इज दैट ओके? इसका 10 मेरा 7, इसका 11 मेरा 8, इसका 11 मेरा 8। अब मैं कांस्टेंट इनटू टाइम पे आ रहा हूं, ठीक है? इसका इसका 19 मेरा 10, इसका 19 मेरा 10। अब मैं थीटा पे जा रहा हूं, इसका 21 मेरा 11, इसका 21 मेरा 11। अब मैं फॉक्सट्रॉट पे जा रहा हूं, फैक्टर। ये फैक्टर में भी वही सेम गेम खेलेगा, पहले F1 निकालेगा एक दिन पहले, फिर F2 निकालेगा, फिर उसका रेट ऑफ चेंज निकालेगा। ओके, मैं वो सब नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली उसी तारीख पे जा रहा हूं और उस तारीख का मैं टाइडल फैक्टर निकाल रहा हूं। ओके, सो मेरा 12, इसका 26, इसका 26 मेरा 12। अब मैं होटल पे आ रहा हूं, इसका 28 मेरा 13, इसका 28 मेरा 13। अब मैं 14 पे आ रहा हूं। अच्छा, 14 में ये चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है, तो ये 14 को तोड़ रहा है बिटवीन 35 एंड 38। इसका 35 एंड 38 इज माय 14, इसका 35 एंड 38 इज माय 14। अब मैं 15 पे आ रहा हूं, आर साइन आर। इसका 32 सॉरी, इसका 30 मेरा 15, इसका 30 मेरा 15, इसका 31
मेरा 16। फिर ये उसको समराइज करता है लाइन नंबर 32 में। इसका 32 मेरा 15 एंड 16, जो मैं बाहर में अलजेब्रिक सम कर रहा हूं उसी लाइन के आगे। इसका 32 मेरा 15 एंड 16। इसका 33 मेरा 17। इसका 33 मेरा 17। फिर इसका 36 एंड 39 मेरा 17 एंड हाफ। इसका 36 एंड 39 मेरा 17 एंड हाफ। यहां तक ओके है? Yes, sir. Is it okay up till here? Yes, sir. ओके अब इसके बाद ये कॉम्प्लिकेट कर देता है। ऑलराइट, ही गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो हम लोग जो है समेशन में चले जाते हैं, राइट। तो हमारा 18, इसका 32। हाँ, अब हम समेशन कर रहे हैं तो इसका 32 हमारा 18। अब हम K1 और O1 पे आ रहे हैं। अब ये जो है गेम खेल चुका है पहले से ही वो अलग से, तो अब ये पूरा उसको कॉम्प्लिकेट कर देता है। सो then he goes off in a tangent in a different direction altogether and he gets very complicated. So you will not be able to locate, you'll have to look very carefully and try to locate our 19 and 20 over there. But ये उसने complicate कर चुका है उसके बाद। So but essentially हमारा जो क्रूशियल है वो 17 तक है। उसके बाद हम समेशन एक्सरसाइज में चले जाते हैं, राइट। सो दैट वाज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट जो हमें यहां से ढूंढना था। एनी डाउट्स अप टिल नाउ? सर हम लोग का जो 9 है वो इसका 12 वाला है। हमारा 9 इसका 12 है। हाँ। A प्लस G इसका 12 है, करेक्ट। हाँ, इसका 12 हमारा 9 है, करेक्ट। ओके सर। और कोई डाउट किसी लाइन में? Any other doubt? No, sir. Okay. All right. अब so basically हर वॉल्यूम में your aim will be, सबसे पहले शुरुआत में you will go first find out the volume। ठीक है, एग्जाम में आपको वॉल्यूम ATT नंबर दिया हुआ होगा, ओके, एग्जाम में। लेकिन क्लास में मैं जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं, तो मैं आपको जान के वो नंबर नहीं दूंगा, जान वॉल्यूम नहीं दूंगा, ओके, ताकि यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ कि सर्च कैसे करना है। अगर बाई चांस वहां पे नहीं गायब कर देते हैं वो लोग, तो यू शुडंट गेट स्टम्प्ड। सो आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट। So I will in the class I will not give you the ATT number, I will not give you the volume. So what will you do? You will first find out which volume it is by the map. Yes. You will go to the geographical index, end of the volume. वहां से ATT number निकालोगे,
Next, you will go into the part 3. That is the Z0 wala column of that volume. And वहां से अपनी सारी कार्यस्तानी शुरू करोगे. This is how you're going to follow. ठीक है? Is that okay? ये जो अभी आपने ये त्यांजिन का करवाया था, ये तो स्टैंडर्ड पोर्ट है, तो अगर आप इन फ्यूचर अगर हमको सेकेंडरी पोर्ट का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें कुछ चेंज तो नहीं होगा? नहीं, आपको जो भी क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं लिखा हुआ होगा वहां पे, तो आपने उसको सिंपल हार्मोनिक मेथड से ही करना है. इज दैट ओके? आपको उसको सिंपल हार्मोनिक से ही करना है. अगर लिखा हुआ है तो भी करना है, और नहीं लिखा हुआ है तो भी करना है. Okay. हाँ जी. I'd given 2 questions for homework. Let's discuss those questions. So the first one was, you're going from 1025 and you're going to fresh water. So basically you're going from Chennai to Haldia, right? And you had your initial drafts at Chennai, which were given to you, which was 9.158 forward and 9.207 aft. And now, so you found out your hydrostatic draft at Chennai, and that came out to be equal to 9.183. Then you found out your displacement at Chennai, and that came out to be equal to 19494.5. This was your displacement at Chennai. Then you put it in the formula and you got your LCG at Chennai. That LCG was equal to 72.175. This was your LCG at Chennai. Then when you went to fresh water, what drafts did you get? So 9.388, 9.378. 9.388 9.378. and 9.37. 378, sir. 9.378. aft. How much? Did you get aft? Sir, 9.378. Correct. She was down by head. सर ये डिस्प्लेसमेंट हमारी तो 19495 आ रही है, डेसिमल 67. 19495. Yes, sir. 19495.7 आ रही है. Okay. 19495.7.
ठीक है, एलसीजी कितनी आ रही है? सर एलसीजी तो राइट है 72. एलसीजी ठीक है। एलसीजी ठीक है, ओके. सो व्हेन यू वेंट टू फ्रेश Haldia, you would have got a negative trim in the formula. Yes, sir. And that meant that your vessel was going down by head. Yes, sir. Yes, sir. And so therefore, at Haldia, these were your drafts. Any doubts in this question? Any doubts in this question? Is it okay? Can we move ahead? Okay. Going to the second part of the question. You are going from 1025 to 1010. Again, the same way you will move. And you will find out the equivalent displacement in 1010 and your equivalent displacement in 1010 comes out to be equal to 19785.26. Sir, this will be equivalent displacement. 19. Ajay? Sir, whatever displacement was in seawater in Chennai, so with that displacement we are going to 1010. So that that will be our actual, and then now it is in 1010. So we have to enter in the particular. So we will convert this one to equivalent to seawater again. Correct. Yes, sir. So that was 19784.022 equivalent. Is this okay with everyone? 19785.2. 19785.2. Okay, that's fine. Oh, very 785 point. So 785 point. 2. Point. Okay. All right. Now, for this, you will find out the MCTC, 1025, and then you will convert it to MCTC 1010 by dividing by 25, multiplying by 1010. So how much does that come to? $212.803. 212.03. This is your MCTC 1010 after doing the conversion. 2.817. सर एक्चुअली आई एम ये डिफरेंस मेरा जो आ रहा है वो 19494.5 जो था ना डिस्प्लेसमेंट, उसके कारण 1 का डिफरेंस आ रहा है. सो आई विल करेक्ट दैट वन. Yeah. The answer 212.817 है. 81. 7. This is your MCTC 1010. Yes, sir. Yes, sir.
Is that okay with everyone? So using this data now, you will calculate the final trim. What does that come to? 0.0. This is you're getting a positive trim. If you're getting a positive trim, that means TA will be plus and TF will be minus to the hydrostatic draft. If trim is negative, then TF will be positive and TF will be negative to the hydrostatic draft. Then only will you get a positive or a negative trim depending on, because your drafts have to match to this trim, right? Eventually. These drafts are dependent on the trim. Is that okay with everyone? Okay.